Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of classical dynamics. Let's begin. एठारे आमे क्लासिकल डायनामिक्स डीएससी पेपर रो यूनिट नंबर 4 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2 यार 1 मार्क टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिबा. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. क्वेश्चन नंबर 1, द 3 डायमेंशनल स्पेस एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम टुगेदर फ्रॉम द 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम. माने तीनटा पोजीशन कोऑर्डिनेट गोटे टाइम कोऑर्डिनेट. पोजीशन कोऑर्डिनेट को आम कहूचे स्पेस, टाइम कोऑर्डिनेट को टाइम. से कहूँ तीनटा स्पेस एवं गोटे टाइम मिसिकी गोटे 4टा डायमेंशनल स्पेस टाइम सृष्टि करुछंती. स्पेस टाइम बा ताको आम कहि परिबा मिंकोक्सी स्पेस. मिंकोस्की स्पेस. If the square of space-time interval is positive, then the interval is said to be dash like. जदि का स्पेस टाइम रो स्क्वायरटा जाको हम S12 आकार लिखुचे जदि सेटा पॉजिटिव हैला तबे सेटा केउ प्रकार रो इंटरवल कुहा जिवो. दैट इंटरवल इज स्पेस लाइक. क्वेश्चन नंबर 3, if the square of space time interval is negative, then the interval is said to be dash like. जितेबाला तार स्क्वायरटा नेगेटिव आसी से समय ताको आमे कहिबा टाइम लाइक इंटरवल. क्वेश्चन नंबर 4, इफ द स्क्वायर ऑफ द स्पेस टाइम इंटरवल इज 0, देन द इंटरवल इज सेड टू बी डैश लाइक. जितेबाला तार स्क्वायरटा 0 हो जाउची ताको आमे कहिबा लाइट लाइक इंटरवल. क्वेश्चन नंबर 2 रे हम देखिले जदि हमर पॉजिटिव आसथिला स्पेस लाइक, नेगेटिव आसिले टाइम लाइक, 0 आसिले लाइट लाइक. क्वेश्चन नंबर 5, द रियल इंटरवल्स बिटवीन इवेंट्स आर रिफर्ड टू एज डैश लाइक इंटरवल्स. जदि का सही स्पेस इंटरवल मध्य जो डिफरेंसटा गोटे रियल आसीबो तबे ता केउ प्रकार इंटरवल कुआ जिवो. दैट इंटरवल इज नोन एज स्पेस लाइक इंटरवल. क्वेश्चन नंबर 6, द इमेजिनरी इंटरवल्स आर रिफर्ड टू एज डैश लाइक इंटरवल्स. जदि तांका भितर डिफरेंसटा इमेजिनरी आसिला तो ताको केउ प्रकार इंटरवल हम कहबा. दिस इज कॉल्ड टाइम लाइक इंटरवल. द इमेजिनरी इंटरवल्स आर रिफर्ड टू एज टाइम लाइक इंटरवल्स. क्वेश्चन नंबर 7, ए 4 वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड डैश वेक्टर. 4 वेक्टर को आमे कहि परिबा लॉरेंस वेक्टर. ए 4 वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड लॉरेंस वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 8, the emission and reception of pulse of light correspond to dash like interval. ताको आमे कहबा लाइट लाइक इंटरवल. इमिशन हेई परिबो किंबा रिसेप्शन हेई परिबो. लाइट करेस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ लाइट लाइक इंटरवल. लाइट रो इमिशन होबो किंबा लाइट रो रिसेप्शन होबो. लाइट बाहर की जिवो किंबा लाइट को कलेक्ट करा जिवो इन द फॉर्म ऑफ ए पल्स. That is known as light like interval. A vector in 4 dimensional dash space is called a 4 vector. 4 dimensional Minkowski space. A vector in 4 dimensional Minkowski space is called a 4 vector. The scalar product of any 2 vector is invariant under dash transformation. स्केलर प्रोडक्ट इनवारिएंट हम आम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रे. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 4 वेक्टर इज इनवारिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ए 4 वेक्टर हैज 3 डैश लाइक कंपोनेंट्स एंड 1 डैश लाइक कंपोनेंट. 4 वेक्टर 3टा आम रोची स्पेस लाइक कंपोनेंट एवं गोटे टाइम लाइक कंपोनेंट. The space port of the 4 momentum is जो 4 मोमेंटम कहूचे 3टा मोमेंटम रो कंपोनेंट रोची एवं गोटे एनर्जी रो कंपोनेंट रोची जेटा हमें कहूचे 3टा आम रोची स्पेस पार्टा मोमेंटम करेस्पॉन्ड करूची
एवं टाइम पार्टा एनर्जी करेस्पॉन्ड करुच्ची तेणुकरी स्पेस पोर्ट ऑफ द फोर मोमेंटम इज मोमेंटम. Question number 13. For space-like intervals, the time separation between the two events is dash. Then the time taken by light in covering distance between them, so that the principle of dash does not hold good. Space-like interval the time separation between the two events ताको आमे कहिबा time separation टा कम हबो, less than the time taken by light covering that distance. So that principle is dash does not hold good. That principle को आमे कहिबा causality. The principle of causality does not hold good. Question number 14. Write the expression for square of the interval s1 to the square between two events with space time coordinates जेतला x1 y1 z1 t1 तीनटा पोजीशन गोटे टाइम तीनटा स्पेस गोटे टाइम और अन्य गोटे कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 t2 हमकु देइछि s12 रो स्क्वायर टा केते s12 रो स्क्वायर आसी जिवो l12 रो स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t2 माइनस t1 रो स्क्वायर एठारे हमर जो l12 रहिला l12 रो स्क्वायर दीटा पॉइंट आमको देइछे दीटा पॉइंट भितर ता सेपरेशन जान केते कि x2 माइनस x1 रो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रो स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 रो स्क्वायर s12 रो स्क्वायर पचारथिला हमको s12 रो स्क्वायर हमें केते बोल लिख देले. क्वेश्चन नंबर 15. 3 space time interval is invariant under Lorentz transformation in inertial frames of reference. Do you agree with this statement? Yes, we are agree. कारण तीनटा स्पेस टाइम इंटरवल टा इनवारिएंट रहउची लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रे कोथरे ना जे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आमे नैथिबा. The time sequence of events remains the same in all inertial frames of reference. For time like interval, state if it is true or false. एटा ठीक अछि, that is true. कारण तीनटा time sequence of the events remains the same in all inertial frame of reference, that for time like intervals. If the interval between two events is space like, there exists a reference system in which the two events occur simultaneously. Is it correct? Yes, ठीक अछि. Yes, if the interval between two events is space like, interval दीटा event मध्य जो space like हुए, there exists a reference system in which the two events occur simultaneously. तेणुकरी गोटे reference system रहिबो जेंथि दीटा events गोटे पर अन्यटी संगठित हेबो. स्टेटमेंट ठीक अछि. If the interval between the two events is time like, there exists a reference system in which the two events occur at the one and the same place. State it is true or false. एटा हमर जानि कि false रहिबो. प्रीवियस टा यदि हमर ट्रू रहउची एटा जनरली false रहिबो कारण ए सिचुएशन नै ता ठीक अछि, ए सिचुएशन नै ठीक नुहे. And do time like or space like character of an interval depend on the frame of reference. The character of an interval does not depend on the frame of the reference. Does not depend in the frame of reference. Events separated by a space like interval cannot be in a cause and effect relation. Is it true? Yes, एटा हमर ठीक अछि. Events separated by a space like interval cannot be in the cause and effect relation. Causality is obeyed between two events for time like intervals. Right? Yes or no? Yes. Causality is obeyed between the two events for time like intervals. Time like intervals ame causality देखिया पई पाउछे. What is the name of the interval for two events which happen in a given frame of reference at different points in space and at different instants of time?
that is called space time interval. Space time interval, this is called as space time interval. माने से इवेंट दीटा इवेंट जे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे संगठित होची डिफरेंट पॉइंट स्पेस रे एवं डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम रे वी कॉल इट एज स्पेस टाइम इंटरवल. The square length of any 4 vector is measured to be the different in any observer. Correct the statement if needed. The square length of any 4 vector is measured to be the different, not different, that is same. Here is the same. The भूल अच्छी ताको हम ठीक कले. The square length of any 4 vector is measured to be same to any observer. Next, question number 24. Can an electron absorb a single photon in free space? No. Single photon कौन से absorb करियो कि नुहे no. Write what is the value of the square of magnitude of 4 vector. Square of magnitude of 4 vector नगर u mu ये आसी जीवा minus c square, that is c square, and the magnitude आसी जीवा c square. Square of magnitude of 4 vector. Write the value of the square of the 4 vector 4 momentum. Is it independent of the reference frame? 4 momentum हेले p mu ये आसीबो minus m naught square c square. It is Lorentz invariant. ये जो क्वांटिटी टा कहला it is Lorentz invariant. जेहेतु Lorentz invariant, independent of frame of reference, so it is independent of frame of reference. जेहेतु ए क्वांटिटी Lorentz invariant तेनकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस संगे से डिपेंड करबो नाही. क्वेश्चन नंबर 27. राइट द वैल्यू ऑफ एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर. एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर वैल्यू आमे लिखिबा. एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर ताको हम p mu द्वारा डिनोट करछे. तार तीनटा स्पेस कंपोनेंट रहला px py pz एवं गोटे टाइम कंपोनेंट i e डिवाइडेड बाय c. आको हम शॉर्ट फॉर्मेट रे जदि लिखिबा, शॉर्ट फॉर्मेट रे लिखले p mu is equal to p that leads to px py and pz. Next, i e divided by c. P mu is known as energy momentum 4 vector. Write the expression for 4 velocity. 4 velocity रो आमे expression लिखिबा u mu, that is gamma ux, gamma uy, gamma uz, I gamma c. अब शॉर्ट फॉर्म में हम यदि लिखिबा u mu is equal to, this is u divided by 1 minus u square by c square under root. Next I c divided by 1 minus u square by c square under root. जेउठारे हमर गामा रो वैल्यू जानि कि 1 divided by 1 minus u square by c square under root. This is the notation for 4 velocity. Is p square minus e square by c square is Lorentz invariant? Yes, that one is Lorentz invariant. Under Lorentz transformation we obtain the same value. Are u mu and d u mu dt orthogonal to each other? U mu टा हमें कौन लिखुचे? This is the 4 velocity vector. तार rate of change टा orthogonal रहिबो. एटा orthogonal. Yes. What do you mean by conservation of 4 momentum? 4 momentum टा conserved. तो केते बेले कहिबा? जेते बेले आमे गोटे isolated system नबा. In an isolated
system, the total energy momentum, for 4 vector remains constant. कंजर्वेशन ऑफ 4 मोमेंटम आम बुझे जदि आम आइसोलेटेड सिस्टम ना से टोटाल एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टरटा कन्स्टांट रहिबो बिफोर जेतिक थिला आफ्टर सेतिक रहिबो ए सिग्नल व्हिच इज रेड शिफ्टेड मीन्स दैट इट इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ डू यू एग्री विथ दिस व्यू यस आम रेड शिफ्ट केते बेले कहबा जेते बेले तार सिग्नलटा शिफ्ट करिवो लॉन्गर वेवलेंथ को देन वी कॉल इट एज रेड शिफ्ट ता परवर्ती प्रश्न पचारछि ब्लू शिफ्ट उपरे ब्लू शिफ्टेड सिग्नल्स आर शिफ्टेड टू द शॉर्टर वेवलेंथ इज इट ट्रू यस रेड शिफ्ट कहले से शिफ्ट करिवो लॉन्गर वेवलेंथ को ब्लू शिफ्ट कहले से शिफ्ट करिवो शॉर्टर वेवलेंथ को राइट द एक्सप्रेशन फॉर ब्लू शिफ्ट फ्रीक्वेंसी पे बर्तमान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिबा न्यू डैश ता कोन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी केते थियो इनिशियल जेति फ्रीक्वेंसी थिला 1 माइनस v बाय c डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाय c रो अंडर रूट इटा इज का पे एक्सप्रेशन ब्लू शिफ्ट फ्रीक्वेंसी पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेड शिफ्ट फ्रीक्वेंसी जे लॉन्गर वेवलेंथ आड़ को शिफ्ट करबो ता पे हमर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी केते आसीबो ना इनिशियल केते फ्रीक्वेंसी थिला 1 प्लस v बाय c डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय c रो अंडर रूट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 राइट द एक्सप्रेशन फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट रे अपरेंट फ्रीक्वेंसी पे कोन एक्सप्रेशन सिमिलर एक्सप्रेशन रहबो गोटे हमर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी केते रहबो ना केते फ्रीक्वेंसी थिला बर्तन जानी चेंज है केतेला 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो अंडर रूट दिस इज आवर apparent frequency expression if a mu is a 4 vector and alpha is an invariant then is alpha a mu is also 4 vector देखो एटा 4 वेक्टर माने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करा जाय परिबो अल्फाटा इनवारिएंट तार लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करा जाय परिबोनी गोटिकर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करा जाउची अन्यटर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हे पाउनी या सहित मल्टीप्लाइड हे अछि ता माने एटा गोटे 4 वेक्टर भलिया काम करिवो कि नो दैट इज नॉट यूजुअली ए 4 वेक्टर नो two identical particles one with energy E1 and other with energy E2 collide head on and a new particle X is produced. Write the equation using conservation of 4 momentum. 4 momentum conservation expression केमिति हम लिखिबा बिफोर केतिके एनर्जी थिला आफ्टर केतिके एनर्जी हला एटा हो जे हमर 4 momentum energy before after conservation of energy कहले IE by C before केते थिला IE by C एठी हमर E stands for IE divided by C Lorentz transformation can be visualized as a rotation in the complex Minkowski space. Is it true? No. Sorry. Yes. ताको हम विजुअलाइज करि परिबा जेहेतु लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टा हम 4 वेक्टर पय यूज करछे एबे कॉम्प्लेक्स मिनकोक्स स्पेस रे मध्ये हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करि परिबा राइट द टू एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर पय हम लिखिबा p म्यू टा केते ना px py pz IE by C आकु जदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखु जे p म्यू टा केते आसी जाउची p that is IE by C equation number 1 again the time the product करिवा p mu या आसी जाउची केते minus m naught c square that is equation number 2 ये गोटे एक्सप्रेशन आसिला अन्य गोटे एक्सप्रेशन आसिला क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट
लंगिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट कौन जितेबले when the light comes along the relative motion between the source of light and the observer, then that type of effect we called longitudinal effect, then it is called longitudinal or radial Doppler's effect. रेडियल डॉपलर्स इफेक्ट जितेबले लाइटा कम्स एलॉन्ग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर से समय से प्रकार इफेक्ट को आम कह लंगिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट बा रेडियल डॉपलर इफेक्ट यही भाव में आम सर्ट क्वेश्चंस गुड़ी को आलोचना करने यूनिट नंबर 4 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 to 23 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 to 34 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 up to 41. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.